एनडीए एक ऐसी मशीन है, मैं कहता हूँ एक ऐसी फैक्ट्री है, वो ऑर्डिनरी बॉयज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेन में कन्वर्ट करती है. कि देयर इज अ लॉट एंड लॉट विच इज कॉमन बिटवीन the military and the corporate. 63 odd percent millennials say that they are, they change over companies or they get disappointed that there's no leadership training at all levels in their company. What according to you, मतलब आपके हिसाब से 5 qualities जो एक लीडर में होनी चाहिए to be successful, drawing from a military leader to a corporate leader? When I talk to students in colleges, I say आपका तो number one challenge of life is to cope up with the speed of change. करना है तो करना 100%. Because in the army there's no, it's not target 70%, 80%. It's 100% or 0%. Yes. Either you succeed or you fail. सो आज का ये जो कॉन्वर्सेशन है इसमें हमने ब्रिगेडियर सुशील बसीन के साथ बात की है, जो एक काफ़ी फेमस और वेल नोन लाइफ कोच है, थॉट लीडर है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट स्टाइल, एंड उन्होंने अपना लाइफ मिशन बनाया है इन ऑर्डर टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ व्हाट ही लर्नड इन द मिलिट्री, जो 34 इयर्स की उन्होंने सर्विस की है वो, और उसे कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं इन अ कॉर्पोरेट स्टाइल लीडरशिप, बिकॉज काफ़ी पैरेलल होते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट द मिलिट्री डज इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, एंड ऑल्सो कैसे उसे इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स है इसमें जिसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें पिक कर सकते हैं. लंबा कॉन्वर्सेशन है, सो इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने स्प्लिट किया है. ऑफकोर्स अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे जो पॉडकास्ट के ऑडियो प्लेटफॉर्म्स आते हैं उस पर जाके हमारा ऑडियो पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. Hi, Brigadier Basin. Welcome to Expert Talk with Bhavya Desai. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज ये कॉन्वर्सेशन के लिए, बिकॉज आपके काफ़ी सारे वीडियोस एक्चुअली मैंने देखे हैं in terms of what is the sort of style that you like to adopt when it comes to the corporate leadership. तो बहुत सारे मन में सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं होप करता हूँ कि ये माध्यम से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सीखने मिले, स्पेशली हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट थिंग्स. सो वेलकम वंस अगेन. Thank you very much, Bhavya. I'm so happy to be here at the Expert Talks, and it's really a pleasure. Great. So आज का जो कॉन्वर्सेशन है, ऑफ कोर्स बिकॉज आई नो नेचुरली बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, स्पेशली मिलिट्री में जो काफ़ी चीज़ें करते हैं, एंड उससे कैसे बेनिफिट हो सकते हैं इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट लीडर्स. सो दैट इज़ द आइडिया एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू फोकस ऑन. तो सबसे पहले तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि आप कितने साल से मिलिट्री में थे, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, एंड उसके बारे में, दैट विल बी ग्रेट. सो बैकग्राउंड तो ये है कि बचपन से ही ना आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि माय मेरा जो बचपन है वो शिमला में निकला. आई डोंट थिंक गॉड कुड हैव गिवन मी अ बेटर प्लेस देन शिमला फॉर अ चाइल्डहुड. एंड व्हेन आई यूज्ड टू बी वॉकिंग टू द स्कूल, एंड देयर वर नो स्कूल बसेस इन एनी केस, तो उसी रोड, मॉल रोड के ऊपर army officers used to be walking, no, not walking, marching on the road in small groups. And in that tiny mind of mine, I used to think कि यार कभी ऐसा मैं भी बन सकता हूँ क्या. मेरे पूरे खानदान में कई जनरेशन से कोई भी फौज में नहीं रहा है, और मेरे को फौज का कोई आइडिया भी नहीं था, और मेरे को पता भी नहीं कि क्या है. बट खाली उनका जो स्टाइल, जो ग्लैमर जो होता है यूनिफॉर्म का, वही देख के, so that this bug hit me that can I join the army. And then it's a long story, but मेरे को एक फ्रेंड ने बताया कि वो सैनिक स्कूल में भर्ती हो रहा है. तो उसी से मैंने प्रोस्पेक्टस लिया. फिर मेरे पेरेंट्स वुडंट हैव अलाउड मी, तो मैंने अपने ग्रैंडफादर की मदद लेके, बिकॉज ही सेड मैं साइन करता हूँ. इन दोज डेज ही सेड, वो टॉकिंग अबाउट माय फादर, वो कौन होता है तुमको मना करने वाला, मैं हूँ ना. So I went to Sainik School. I was only 10 when I went to Sainik School. I was in class 7. And 4.5 years in Sainik School, from class 7 onwards, खाकी निक्कर, खाकी शर्ट पहन के सुबह 6 बजे उठना, रात को, वो एक रूटीन बचपन से ऐसी इस्टेब्लिश हो गई कि वो जो
जो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं वो तो बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही वो अपने रग रग में आ गया। उसके बाद 3 साल, सो इफ यू रियली काउंट ऑल दिस, इट वाज 4.5 years इन सैनिक स्कूल, 3 साल एनडीए में। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हम सैनिक स्कूल में गए और आस्ता आस्ता पता चलने लगा कि फौज क्या है और क्या फौज का नहीं, उस टाइम खाली एक चीज दिखती थी, एनडीए, और जिंदगी में और कोई लक्ष्य नहीं था कि बस एनडीए हो जाए। तो मेरा एक जोश टॉक है इसके ऊपर कि कैसे वो हुआ, क्या क्या अड़चने आई बीच में, मैं मेडिकली रिजेक्ट हो गया, लगा मेरे सारे सपने ही चूर चूर हो गए हैं, बट स्टिल विद दैट मैनिफेस्टेशन, विद दैट डिटर्मिनेशन, वेंट थ्रू अ मेडिकल बोर्ड एंड सिलेक्ट हो गया। तो वो जो 3 साल मेरे एनडीए के हैं, आई ऑलवेज से that the best thing that happened to me in my life was NDA। वो NDA एक ऐसी मशीन है, मैं कहता हूँ एक ऐसी फैक्ट्री है जो ऑर्डिनरी बॉयज, अपनी नाउ इट इज बॉयज एंड गर्ल्स, बट वो ऑर्डिनरी बॉयज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेन में कन्वर्ट करती है। You know, anyone who's gone through those 3 years, he turns out to be much better than what he was when he went in। Wow। तो वो एक बड़ा डीप वो जो डिसिप्लिन ट्रेनिंग जो है बहुत डीपली जाती है। अंडरस्टैंड। यू नो, आई वांट टू आल्सो टेल यू एट दिस स्टेज ओनली कि हमने वो लीडरशिप लेसन्स जो हैं पहले दिन से सीखे, पहले दिन से, ठीक है, फ्रॉम द टाइम यू लैंडेड अप देयर एंड दे मेड यू कैरी योर ट्रंक टू योर स्क्वाड्रन, एंड वहीं से ट्रंक रखा और कुछ नहीं करने दिया, बोलो जाके हेयर कट। सो हेयर कट हुआ पहले ताकि हम सब एक जैसे दिखें। तो यू नो क्या क्या पर्पस था वो बाद में समझ में आया, उस टाइम तो बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ। बट आई विल टेल यू दैट every day was a leadership lesson, not taught to you in a classroom. It was being taught to you on the ground. And that is why I also say no corporates, no other organizations can teach leadership like that, because the Indian Army invests whole lot of money, time, effort over years to teach you leadership। तो मैं आगे कुछ चलेंगे तो जब एग्जाम्पल्स आएंगे बताऊंगा आपको। और जब हम पहली बार मैंने अगर एक लीडरशिप का लेसन सुना स्टेज से या you know from the mic or whatever, first time was when I had 13 years of service, means 17 and a half years after starting my career। पहली बार स्टाफ कॉलेज में द कमांडेंट केम एंड गेव अ लेक्चर ऑन लीडरशिप। तब तक हमने कभी लीडरशिप क्लासरूम में नहीं पढ़ी थी। और जो लीडरशिप कॉर्पोरेट में पढ़ाई जाती है या वो क्लासरूम में होती है या वंस इन अ वाइल एक प्रोग्राम होता है जो सब नहीं अटेंड करते हैं जी। सो दैट इज व्हाई द आर्मी हैज लॉट्स एंड लॉट्स टू टॉक अबाउट लीडरशिप। राइट, बट ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब व्हाट डू यू थिंक के कॉर्पोरेट लीडर्स सीख सकते हैं फ्रॉम द आर्मी और मिलिट्री स्टाइल इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप? ये बहुत लोग सवाल करते हैं और ये बहुत बहुत अहम सवाल है। और मैं समझता हूँ फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एंगल दैट दिस क्वेश्चन इज क्वाइट नेचुरल। बात ये है कि क्योंकि 34 years मैंने ये एक्सपीरियंस किया इन द आर्मी, एंड आई से 34 years ऑफ सर्विस, एंड इफ यू काउंट 4 years ऑफ ट्रेनिंग एंड 4 years ऑफ सैनिक स्कूल, चलो 4 years सैनिक स्कूल छोड़ो, it is 38 years of military leadership experience that I've had। But there'll be very few people, ये तो बहुत लोगों का experience होगा, पर I am one of the very few people who has also then applied the principles of army or military leadership into the corporate world। मैंने कम से कम 700 से ऊपर प्रोग्राम कॉर्पोरेट लीडरशिप के किए हैं, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। और they are not again classroom trainings, they have been outbound trainings, they have been like experiential learning where we facilitate and not train। So जो interactions मेरी हुई हैं corporate से, तो ये समझ में आया है कि there is a lot and lot which is common between the military and the corporate। तो क्वेश्चन ये आता है जो आप भी पूछ रहे हैं, लोग बोलते हैं कि आर्मी से कॉर्पोरेट का क्या लेना देना है? वो तो बिल्कुल अलग है। आर्मी का पर्पस अलग है, आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है, आर्मी में रिक्रूटमेंट अलग तरीके से होती है, तो हमने उससे क्या लेना देना है?
लेकिन there are 2-3 things. One is, I say, and that's my opinion, a lot of people can not agree with it, that's up to them. I say that military leadership is the mother of all leaderships. It's the ultimate leadership. Why? कोई लीडर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, स्पोर्ट्स लीडर हो, कॉर्पोरेट लीडर हो, बिजनेस लीडर हो, कोई भी, किसी की ये जिम्मेवारी नहीं है या ये उसका टास्क नहीं है टू टेक मेन एंड लीड देम इन वेरी टफ एरियाज ऑफ टेरेन, कि कोई जैसलमेर में 50 डिग्रीज में ऑपरेट कर रहा है और कोई सियाचिन में कर रहा है एट -30 डिग्रीज, ये कोई नहीं कराता. Number one. Number two, nobody has a task to go into a barrage of bullets and still keep going. Okay. And when you lead men into war where you have a risk of limbs and life, ये कोई लीडर नहीं करता. तो like Marshall Goldsmith says that leadership is influence, nothing more, nothing less. तो जो अगर हम एक जवान को इन्फ्लुएंस करके उसको इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना इंस्पायर कर देते हैं कि ही इज प्रिपेयर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, इससे ज्यादा कोई क्या है किसी को इंस्पायर करेगा. तो जो आदमी ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, nobody does this. Second thing is, there are principles of war. All armies have it. We have 10, some armies have 6. We are very close to the principles of war of British Army because we adopted it from there. Yeah. But all armies have it, and उनमें से कम 5-6 ऐसे हैं जो सबके common हैं. So if I was to tell you, we remember it with a acronym of a case of CSM. So it starts with AIM. Okay, then it is concentration of force. It is adaptability, case, surprise, economy of effort, and so on. So there are 10 of them. Now, ये जो principles हैं, मैंने इनको एक एक को देखा है कि वो सब corporate में भी applicable है. If surprise is a principle, if security is a principle, is it not applicable in the corporate world? The only thing is, उसकी application अलग है. You don't apply it the way you do it in the army, but the principle remains the same. Right, fundamental. If communication is a principle, isn't trust very important in the corporate world as well? Right. Okay. So, I have found a lot of similarities, और मैंने अभी अपने in the 20 years that I've been out of the army, मैंने इसके कई tools बनाए हैं. एक आर्मी में हमारा एक सिस्टम होता है, it's a process, or it can be called a template, which is called the military appreciation. So that military appreciation is a logical way of arriving at a sound operational plan. मैंने बहुत कॉर्पोरेट्स में ये सिद्ध कर दिया कि वही वाला टेम्पलेट आप भी यूज कर सकते हैं टू कम टू अ साउंड बिजनेस प्लान. हम बोलते हैं एनिमी, आपकी है मार्केट. मैं बोलता हूँ टेरेन, सॉरी आपका है कंपेटिटर. मेरी एनिमी है, आपका कंपेटिटर है. मेरी टेरेन है, आपकी मार्केट है. ठीक है, मेरा एम है, वो आपका भी एम है. ठीक है, मेरा सरप्राइज है, आपका भी सरप्राइज है. मेरा टाइम है, वो आपका भी टाइम है. So there are some which are very common, there are some which are you can equate them. So if you use the same type of a process with modifications to what you need, this is very applicable there. So I remember एक कोई 2012 या 13 की बात होगी, in one of the corporates, at the end of it, these people got so happy about it. कहते हैं सर ये तो बड़ा सिंपल है, ये हम क्यों नहीं यूज करते हैं. मैं कहा आप बताओ आप क्यों नहीं यूज करते हो. And they started using it. So this is why army or military leadership is applicable in the corporate world. I'll tell you 2-3 more things about it, which are very important and nobody talks about it. One is that I follow this gentleman called Simon Sinek a lot. Okay. Are you aware of him, Simon Sinek? No. So Simon Sinek is a very well-known speaker, trainer, coach, whatever, and he has got a TEDx talk
which is very highly acclaimed, called The Golden Circle. Okay. And he's written a book called Start With Why. तो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, और जब मैं उसके वीडियोस देखता हूँ और सुनता हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि लुक एट दैट, दोज वीडियोस आर टू गुड. ओके, अगर कोई इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है इन नोइंग मोर अबाउट military leadership and why it's applicable in the army, then Simon Sinek is a good chap to follow. Right. तो उसकी 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी मेरे को, एक है उससे पता मेरे को ये चला कि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम मिलिट्री में यूज करते हैं, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. इट इज नॉट ओनली इन द इंडियन आर्मी, बट देयर इज अ डिफरेंस. नो अदर आर्मी दैट आई नो ऑफ, अदर देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड चाइना फॉर एग्जांपल, जो हमारे फ्रंटियर्स पे हैं, all other countries have armies which stay in peace areas and are deployed only during operations. Right. But हमारे live borders, active borders हैं, और हमारी फौज जो है वो तकरीबन quite a large percentage of it is deployed on live fronts with live enemy, including ambushes and all. Right. That keep going on in J&K and all. In China we've had Galwan and all that. तो ये हमारे लिए एक और चुनौती है, जो हमारे कितने ट्रुप्स जो है सियाचिन में पूरे 12 महीने रहते हैं. Kargil sector and all, whatever happened, you know. Right. All these people stay there. So that means our experience, our problems, our challenges, our training, and our experiences are far more than any other army. Right. Okay? So one, I said it's universal. The second thing is, एक उसके साइमन सिनेक के वीडियो में 3-4 चीजें बहुत अच्छी कही उसने. He says it is not whether the military leadership is better than the corporate or not. There is no comparison. You can't compare oranges with apples. But he said, and I really like it, he says military leadership में everything gets seen and the results are exaggerated. What is good is really good. What is bad is really bad. So he says, I learn all my leadership from the military because you can see the risk taken, you can see the results achieved, you can see the planning done, जो कि corporate में नहीं दिखती है. So it's an amplification or a magnifying form, easy to learn from there. 2-3 other things he says, which are, you know, because I study this as my research and I apply them here. एक है trust. In the military, we care a lot about trust. Yes, very important. In the corporate, उसका नाम निशानी नहीं. जब आप एक आदमी को रिक्रूट करते हैं in the army, our system of recruitment, both for officers and jawans, has a way of finding out whether this person is trustworthy or not. There is no such format in any recruitment in the corporate. So he talks about a graph, very beautifully done. So if you take trust on the y-axis and you take performance on the x-axis, then जो left bottom wala corner hai, which is low trust and low performance, nobody wants that person. And this high trust and high performance, everyone wants. So उसको छोड़ दो. अब जो बीच का जो corporate में है, they prefer a person with high performance, low trust to what army prefers is that we will prefer a medium trust and high performance, or even low performance and high trust to what the corporate does. Right. So ये जो differences हैं ये हैं, but जब हम ये सीख जाएं कि ये trust बहुत important है, और उसको then I do a lot of workshops only on building trust. Right. And say that how you can build it up in the corporate. Now you don't have to build it the way the army does. Of course. But you can build it in what your is own applicable way. आपके लिए. So ये कुछ चीजें हैं which make it very strong. ये काफी army actually में like army is more mission oriented. Right. Corporate is profit oriented. Got it. ठीक है.
There you do things in the army, we do just in case this happens. Here you say just in time. You're more worried about हमें economy of effort है, but हमारी economy of resources is not a focus. अगर हमें वहाँ पे मतलब एक टैंक लेके जाना है तो टैंक कितना, we will not do analysis कि टैंक versus BMP कितनी cost होगी, जो so you know these are the areas where we differ. Right. But अगर हम उसका जो मूल तत्व निकालें और उसको अप्लाई करें तो there's a lot of right. कि मतलब what is the effectiveness when you use this product in this sort of a situation. Yeah. Right. काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. आपने इतनी सारी बातें बोली विच आर द थिंग्स दैट जो मुझे काफी टच अपॉन करनी है. फॉर एग्जांपल ट्रस्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. डिसिप्लिन इज समथिंग दैट मुझे काफी बात करनी है. आपने एक और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपने एक्चुअली बोला. सो एक मेरे दिमाग में सवाल आता है कि यू नो आई थिंक एज अ मिलिट्री लीडर रिस्क असेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, और उसके वजह से आपको काफी क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्पेशली इन अ लाइव फ्रंट या लाइव एनवायरनमेंट. सो हाउ डज द आर्मी डू दैट एंड हाउ कैन द कॉर्पोरेट लीडर्स इंप्लीमेंट दैट into the corporate world? See, what happens is, let me tell you, let's start with decision making, and from there we'll come to the risk management. There are two types of decisions. One are deliberate decisions and one are quick decisions. And a form of quick decisions, I'll say, are critical decisions. Okay. Right? So, एक तो ये है कि अगर हमें, for example, I'm planning to launch, let's take 71 example, when Manik Shah said that I need time for planning. तो जो decisions लिए, they were deliberated upon over 6 months, planned, and what started in terms of planning in May came into execution in November, December. Right? तो ये तो हैं deliberate decisions, which means they are war gamed, they are discussed, lot of advisors come in, presentations are made. So all that assessment, जिसमें risk assessment भी होती है, जिसमें resource management होती है, जिसमें time, surprise, all those principles of war are used. Those are the deliberate decisions. But quick decisions are when, for example, I was posted in Rajouri, and in Rajouri, right behind our officers' mess was a river. Now, on a Sunday afternoon, we were having in the mess a lunch. We had some guests over, और वहाँ एक लॉन थी. हम लॉन में अपना कर रहे थे लंच, बियर पी रहे थे, and suddenly there was a flash flood. And this river got flooded. And on Sundays, a lot of people used to come to this river for a picnic. Right. And the river got flooded that people ran helter-skelter to come out of it. But some people got stuck in the water. Particularly, I remember one guy standing on a small boulder with a baby in his arms. And हमको लगा कि ये तो जाएगा because उसके ऊपर इतना पानी splash हो रहा था. Now, the boulder was just about 2 or 3 feet below his feet. पानी के छींटे पड़ रहे हैं, गीला हो रहा है, स्लिप कर जाएगा, क्या होगा. Our battalion, there was no way of, टाइम तो नहीं है ना इसके लिए कि हम deliberate करें, कोई conference बुलाएं. Just with one whistle and say, guys, go and save these people. Not a single guy died. Now, this is a very quick, critical decision where it is life and death. This was done in case of civilians, but in operations, there can be cases where you come to know, ye ho gaya. And here what we do is, it is, I told you, training. वो NDA से सिखा रहे हैं. तो over a period of time, how to take decisions is based on factual evaluation of data, processing it properly, preparing for the unexpected, having contingency plans कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे. तो जो इतना कुछ हम करके रखते हैं, उसके साथ it becomes very easy to take the decision at that time. And most leaders develop this over a period of time, over with a lot of experience. You develop an intuitive sense
that without going into a deliberation, you can take a quick decision because आपकी आदत बन गई है. It's a process. Right. And sometimes I'll deviate a little. I'm so impressed by what happened in the Taj Hotel in 2008 when the terrorist attack came. वहाँ पे कोई एसओपी नहीं थी, वहाँ पे किसी ने ये नहीं बोला था कि अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो ये करना है. उसमें both what the army did, NSG, when they went and did the operation, neutralized, and what the Tata staff did. There was a Harvard Business Review study done, and 2 years they took to say that how is it that there were 1,000 plus rooms searched in 48 hours or 72 hours, I think, and not a single. You see, after the NSG came and the room search and all started, not a single civilian lost their lives. Yeah, true. Okay, only terrorists. Some of them they killed, others they caught, but no civilian, no tourist, no guest in the hotel got even injured. What to talk about being killed? Everyone was safely executed. What happened when you study? They say that it was a Tata culture. And I bring back everything to the organizational culture. ये सब कुछ जो होता है, why army people behave the way they do, which their own brothers will not do in the corporate, is the organizational culture. And again, Simon Sinek also says the same thing, and I really found this ridiculous that what we think in the Indian Army, he said that about the US Marines. He said, if you ask somebody, why did you do it? Why did you risk your limbs and life to save that guy? Why did people in Kargil, when Vikram Batra died, launched an attack to take a revenge? Why? Why do counterattacks happen to recover our dead bodies? Why do they do it? And they say that the only reason is that he would have also done the same for me. So ये जो एक organization culture, एक माहौल जो है organization का, whether it was in the Taj Hotel or it is in the army, there's a similarity there. And that is why the corporates need to do a lot of work on building a corporate culture and the values. मेरा experience है that many companies, and I know some for specifics, but I can't name them, they have big nice values written on sunboards on their offices and all presentations made, but आप उनके middle level management leaders को पूछ लीजिए, even senior leaders, they will not know the values. Those values are ornamental. A lot of companies don't live those values. Understand. And it is very important that a corporate culture has to be created and then developed. Right. So what is a good corporate culture according to you? So corporate culture is a one that firstly has very good long-term strategy, has clarity of what they are wanting to do, have clear goals and targets, and then they have implementation strategies worked out in a way that there is good leadership. Do you know there's another statistics by McKinsey report that 63% companies agree worldwide that leadership is not delivering the way they are expected to deliver. Okay, interesting. 63% leaders in the world. They say about 80%. I may go slightly wrong on remembering the statistics, but roughly that. 63 odd percent millennials say that they are, they change over companies or they get disappointed that there is no leadership training at all levels in their company. That means they don't get leadership training. Millennials are saying that. And then there's one more thing they say that I think about 80% companies agree that leadership development training is required very seriously at all levels. And the end part is very ironical, very sad.
they say despite all this, there are not even 5% companies in the world who actually do proper leadership training at all levels. So ये एक बहुत वीकनेस है कॉर्पोरेट की, और जो कंपनियां जिनकी वैल्यूज हैं, उनके वैल्यूज की इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं, उनकी रिटेंशन अच्छी है, लॉयल्टी है, दे केयर फॉर देयर पीपल. बीइंग पीपल सेंट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओ, लेकिन द अल्टीमेट पोटेंट वेपन ऑफ योर्स इज पीपल. उनका मोराल, उनका वी से आर्मी में एक बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है. वो कहते हैं कि लीडर के दो ही काम, टू जॉब्स, एंड आई थिंक दे एप्लीकेबल इन द कॉर्पोरेट एज वेल. नंबर वन इज अकम्प्लिशमेंट ऑफ मिशन एट ऑल कॉस्ट. कुछ भी हो जाए, मिशन अकम्प्लिश करनी. The second is welfare of men. We have been using the word men for soldiers, but अभी men and women जो भी है, that it's applicable to both. Yeah. Right. So now इसके अंदर जो लीडर का काम है ना, बहुत मुश्किल है. It's a very tight rope walk because you have to balance between the two. अगर आप ज़्यादा वेलफेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने अकम्प्लिशमेंट ऑफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा. और अगर आप खाली टारगेट की तरफ देखते रहेंगे तो योर मेन विल बी बर्नड आउट, स्ट्रेस्ड, अनहैप्पी, एंड वी थे इन द आर्मी, अनहैप्पी पीपल कैन नॉट फाइट अ वॉर. राइट. सो इन दोनों को बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो हमें ये सिखाया जाता था शुरू से that you have to tell your people, I'll take care of you, but the mission has to be accomplished no matter what. फिर मेरे को मत बताओ कि गर्मी लग रही थी, बारिश हो गई थी, क्या हो गया था, मैं बीमार था. No question asked. करना है तो करना है 100%. Because in the army there's no, it's not target 70%, 80%. Yeah. It's 100% or 0%. Yes. Either you succeed or you fail. Right. There's nothing in between. Right. You can't say कि I have captured the target 70%. ठीक है? If you create a war widow in 1 quarter, you create a war widow for life. यहाँ तो होता है कि अगर इस बार कुछ नुकसान हो गया तो अगली बार मेकअप कर लेंगे. So our decision making is very crucial. Right. I'll also tell you, when you're talking about decision making, बहुत crucial चीजें होती हैं, बहुत ज़्यादा. For example, when you are attacking an objective, तो जो enemy एक objective के ऊपर है, उसको पहले हम soften करते हैं with shelling. Artillery guns firing from a distance, and that is an area weapon. It is not a pinpoint weapon. So उससे बहुत एक बड़ा radius होता है, depending on किस range से कौन सी gun है, सबके अलग अलग होता है, तो it's called radius of action. तो वो कितने, जहाँ पे उसको हमने एम किया, और not one gun, ना, it's a number of guns. So there's a huge area that's covered. Now, as the infantry is moving towards the objective, there is a time when the outer perimeter of that circle will now become dangerous. That our own people, if the people keep walking, they'll be in the line of fire. They will be in the line of fire, and you'll kill your own people. Right. Now that we can't even lose one soldier with our own fire. So a very quick decision, or rather a very planned decision, there's a complete process for it, that now that thing keeps moving forward. So एक बहुत अच्छा तरीका है, through infantry artillery cooperation बोलते हैं उसको, उनके system होते हैं, signals होते हैं, कि कैसे कैसे वो फायर जो है वो आगे रहेगी और हमारी जो infantry है वो पीछे रहेगी, till this fire has to be lifted. Now when this fire gets lifted, if it gets lifted too early, then our infantry is endangered for longer. Right. If it gets lifted too late, our men are endangered. Right. तो ये एक इतनी important decision हो जाती है, तो इसलिए इसको the precision with which you have to work and take decisions and risk management, everything is coming into that. Decision making, risk management is all coming into that, and that is all because of planned operations, processes,
and systems that have been created over a period of time where no error is acceptable. Got it. But ये corporate world में then sir, do you think के मतलब lot of it is also then applicable to like इतनी अच्छी timing से कि like for example जैसे आप precision की बात कर रहे हैं तो in a corporate world because the variables are also a little bit different and sometimes they keep changing. तो उसके वजह से मतलब टाइमिंग काफी उसे ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी प्रिसिशन की शायद कॉर्पोरेट में जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इफ यू टेक एग्जांपल्स ऑफ timely decisions taken which saved some companies and untimely decisions taken by somebody which ruined the companies. For example, if you just take this example of Nokia and Apple. Right. If Nokia had understood and taken a decision to go in for the touch screen, which Apple understood and Nokia didn't. Now Nokia was working at a complacency when they were offered this this touch screen thing and told कि आपके फोन के ऊपर आधी स्क्रीन है आधा कीबोर्ड है हम पूरे को स्क्रीन बना देंगे and keyboard will come on the screen itself. तो नोकिया ने क्या बोला वी आर मार्केट लीडर्स वी नो बेटर देन यू राइट ठीक है एंड दे पेड अ वेरी हेवी प्राइस फॉर इट ठीक है सिमिलरली देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स सो इट मे नॉट बी दैट क्रूशियल बट इट इज क्रूशियल इन इट्स ओन वे that do you take timely decisions and do you also look into the future जो एक बहुत बड़ी चीज है आर्मी में strategic decisions strategic planning that do you have a long term vision हमारा one of the principles of war is called foresight. Do you have foresight? हमें बचपन से वो NDA से ना foresight कि आगे देखो क्या हो रहा है. So I have worked out for corporate people from their thing. I say that today you have the advantage of analytical tools. You have the advantage कि आपके पास data available जो पहले नहीं. अगर आपके पास डेटा है एनालिटिकल टूल्स हैं तो आप काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि दिस इज द ट्रेंड गोइंग दिस द डेटा ओवर द लास्ट 10 इयर्स और यही ट्रेंड चलता रहा तो 2 साल के बाद ये हो जाएगा राइट अ गुड लीडर प्लान्स फॉर दैट 2 years ahead. So I call this, and there's a diagram I've made for people to understand. I say operate ahead of the predictability curve. जो लीडर्स आज और कल की समस्या को हल कर रहे हैं they will never succeed. वो रह जाते हैं पीछे. एक लीडर वो है जो डेलीगेट करता है लोगों को एम्पावर करता है और वो अपना टाइम लगाता है आगे का सोचने के लिए कि हाउ एम आई प्रिपेयरिंग माय टीम माय कंपनी फॉर द फ्यूचर. सो आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ टॉक्स. मैंने कोविड से पहले तो कम से कम 1 साल में 10 टॉक्स किए हैं ऑन आर यू फ्यूचर रेडी. Sorry, immediately after COVID, because in COVID particularly people understood that if you had not predicted, not COVID, nobody predicted COVID, nobody could have, but if you didn't prepare for certain amount of crisis, and now people after COVID are wiser कि आपको crisis के लिए prepare करना है. That crisis could be anything, it could be a flood, it could be an earthquake, it could be anything. But अगर आपने वो सब नहीं किया तो that is why कुछ कंपनियों ने कोविड में थ्राइव किया और कई सिंक हो गए. राइट इट्स ओनली बिकॉज हाउ वेल वर यू प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉन्टिजेंसी. राइट बट आपको ऐसा लगता है कि आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट्स आल्सो डिफिकल्ट टू बी अ कॉर्पोरेट लीडर एज वेल बिकॉज अभी काफी मतलब हाउ डू आई से इट लाइक फॉर एग्जांपल because हमेशा dynamics in terms of the market, business, there are certain things which are happening जो हमेशा आपके control में नहीं होती है. There are certain things which are in the circle of your influence, certain things which are not. So from that perspective, it's also a little difficult in that respect to be. It is. It is one of the challenges that today all leaders have, right? All leaders have because the speed of change has increased so much. And I tell people, particularly in colleges, when I talk to students in colleges, I say, आपका तो number one challenge of life is to cope up with the speed of change. Because the speed of change is increasing. Right. So, change तो पहले भी होती थी, but
पहले चेंज को टाइम लगता था, अब चेंज को टाइम नहीं लगता. द शेल्फ लाइफ ऑफ एनी न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी सो शॉर्ट दैट बिफोर यू कैन एटलीस्ट हमने तो अपनी एज में देखा है ना कि एक पेजर आया, फिर एक फ्लॉपी आई, कब आई कब चले गई पता भी नहीं चला. ठीक है ना. और कैसे 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 टेक्नोलॉजी चेंज करके अभी तो कोई बात ही नहीं करता ना, लिंक भेज दो. पहले फ्लॉपीज भेजते थे हम, वो या सीडीज को हम कुरियर करते थे एंड ऑल दैट इज गॉन. एंड हाउ सून. सो इफ आई सी इन माय ओन लाइफटाइम the type of changes we have seen are phenomenal. Right. Okay. So ये जो पहले बचपन में थोड़ी कभी चेंज होती थी, फिर चेंज होती थी, अभी फटफट होती है, तो ठक वाली चेंज है. So we have to be prepared for this. यही एक मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी और भी मुश्किल हो गया है. The technological changes that have come into the warfare are so fast. Okay. Right. And at least in India, you have seen on our borders, whether it's drones, the way of fighting a war has become different. Right. The diplomatic war, I'll say psychological war, all this has become a very complex system now. So it is not physical leadership, it is it is the physical, mental, emotional stability of a leader and the people he leads, right, which has become so important. What according to you, मतलब आपके हिसाब से 5 qualities जो एक leader में होनी चाहिए to be successful, drawing from a military leader to a corporate leader? बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैं जब बात करने लगता हूँ तो मैं आपको 5 बता दूंगा तो फिर लगेगा वो छठी भी तो इम्पोर्टेंट है. Because there are many of them, but I'll tell you, if I go with my priorities, number 1 quality of a leader is authenticity and integrity. Army doesn't spare anyone for these. Integrity is number 1. Setting or leading by example is number 2. Establishing trust and transparency in communication, which you can combine as one, is 3. Right? Trust and communication wo ho gaya. And then is resilience. A leader has to learn how to be calm and in adversities, कुछ भी चैलेंज आ जाए, not to panic and be able to recover any adversity as soon as possible. This can be 4. And the 5th one I can say is mission orientation and selflessness. Selflessness की हमें बचपन से सिखा दिया. In NDA the motto was service before self. तो एवरी डे एक मस्टर फॉलन होता है, कभी उसमें, कभी हमारे यहाँ तो ड्रिल स्क्वायर पे हम गाने गाते थे. एक हमारे कमांडेंट गए थे रशिया में, तो वहाँ देखा कि पीपल सिंग व्हेन दे आर मार्चिंग. सो वी यूज्ड टू सिंग ऐसा देश कभी ना देखा, कभी ना, there were values being taught to us through all these modalities with an aim that you become selfless. IMA में 1 साल में उन्होंने हमारे ब्लड में, हमारे DNA में डाल दिया that the safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The welfare and safety of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. You will not complain. You will go by sea, air or land to any place that you are sent to. All these things became a part of our life. तो अभी फिर उसके बाद 34 साल हमने उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं कि मेरी वहाँ पोस्टिंग क्यों हो गई या मेरे को ये हो गया. All that became a part of it. So these are the 4-5 very important things. They are equally applicable in the corporate. Right. एक्चुअली आपने ना काफी सारी स्टार्टिंग में इतनी सारी बातें की, मतलब जिसके वजह से मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग्स दैट यू स्पोक अबाउट अभी थोड़े टाइम पहले वाज अबाउट हाउ अ मिलिट्री लीडर ऑलवेज नीड्स टू एंश्योर के द वेलफेयर इज देयर. लाइक यू सेड, आपने एग्जांपल यूज किया कि आई टेक केयर ऑफ यू,
बट देन यू डोंट कंप्लेन कि फिर बाद में आंधी है, तूफान है, कुछ भी है ऐसा, व्हाटएवर। बट वैसी एप्लीकेबिलिटी आपको लगता है कि कॉर्पोरेट लीडरशिप में हो भी सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नॉट ओनली दैट, आई कैन टेक प्राइड इन सेइंग दैट मैंने कुछ कंपनियों में इसको काफी हद तक अप्लाई किया है, एंड पीपल हैव रिपोर्टेड a very positive change. Right. So basically it is all about attitude. And when I do leadership workshops, I go deep into understanding the culture of that company, the values. और मेरा बहुत एक तरीका है कि I have a 3-step system of my training. I do pre-work, delivery of training and post-work. तो पहले मैं काफ़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझता हूँ, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ डिफरेंट चैलेंजेस, नो टू कंपनीज आर इक्वल, राइट। तो उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनकी मार्केट कंडीशंस क्या हैं, उनका कंपटीशन क्या है, और उनका थ्रेशोल्ड लेवल, जिस लॉट को मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ उनका कितना एक्सपीरियंस है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, how committed are they, all that is taken into account, and then I design a program. So I take pride in saying that my programs are very deeply customized. एक होता है surface customization, कि आपका मैंने चैलेंज सुन लिया, उसको डिलीवर कर दिया, नहीं, I go a little deeper into that. So I normally go and visit the company, see their environment. For example, हमने एक मदर डेयरी की ट्रेनिंग की 2 साल पहले. I went and spent 1 complete day in the Bhiwandi plant. I went through the entire process of how the milk comes, how it goes into different silos and all that. Then 15 days later, I did that and in that visit, I spoke to about 15 or 20 sample people out of 40 people that came for the training to understand from the horse's mouth कि तुम बताओ तुम्हारे challenges क्या. And with my probing questions, I asked them questions where I got to know that ये इस level तक के लोग हैं. तो if I know कि this is your present level and this is where you aspire to be, then my job is to move you from here to here. तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब applicable है. Degree varies. It may not be required in all industries. So you also be a little industry specific. कि इस इंडस्ट्री में, whether it's FMGC, whether it is an IT world, इस इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेबल है. हम एक ही तरह का मॉड्यूल कई लोग करते हैं. I tell people कि यार मैं वो people say, do you have modules? I don't have modules. I create modules. And so I have some frameworks and I modify them according to the requirement of the company. Right. Because everyone needs a different thing. Understand. So this one of the things जो मेरे दिमाग में actually आता है is that see, as you mentioned कि हमारे जो forces हैं, armed forces, जवान जो होते हैं, they are highly motivated because अगर आपको अपनी जान देश के लिए लाइन पे लगानी है तो motivation चाहिए आपको, right? What are the factors that corporate leaders need to keep in mind to motivate their teams? First of all is values and alignment. See, एक लीडर को पहले तो ये होना चाहिए कि जो उनकी कंपनी की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है और जो वैल्यूज हैं. फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम नॉट नेमिंग अ कंपनी, बट दे हैव 5 पिलर्स. दे कॉल देम 5 पिलर्स. अब वो 5 पिलर्स जो हैं, दे शुड बी नोन टू एवरीवन एंड दे शुड बी लिविंग दोज वैल्यूज एट एनी गिवन टाइम. ठीक है. Now, once you get that type of a culture, and then the leader is walking the talk. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक कंपनी की ट्रेनिंग की एंड द मेन प्रॉब्लम वाज कम्युनिकेशन. कहते हैं जी कोई सुनता नहीं एक दूसरे की, लिसनिंग स्किल्स वाज वेरी बैड, कम्युनिकेशन पास ऑन ही नहीं होती थी, कहीं अटक जाती थी एंड ऑल दैट. सो वी डिड अ प्रोग्राम फॉर देम एंड वी डिड लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस एंड ऑल दैट. Time management and communication. Now,
a guy rings me up after about 2 months. He said, sir, आपसे हम बहुत कुछ सीख के आए और हमने अपना टाइम मैनेजमेंट को बहुत अपने अपने लेवल के ऊपर ठीक किया. फिर 2 महीने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई और द CEO वाज टू कम एंड एड्रेस अस. हम बोर्ड रूम में बैठ गए, वेट कर रहे हैं, CEO आ नहीं रहा है. फिर सब अपनी अपनी गप मार रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है. Then some people got a little restless कि यार काम बड़ा पेंडिंग है, शाम को लेट बैठना पड़ेगा, वो आ ही नहीं रहा है, कोई खबर नहीं है कि वो लेट है, कितना लेट है, कब आएगा. He came almost an hour plus late. अगर वो बता दे कि भी मैं लेट हो गया हूँ तो कहते हैं हम जाके अपने अपने ऑफिस में काम कर लेते और 1 घंटे के बाद आ जाते. तो सर हम टाइम मैनेजमेंट का क्या करें अगर so see if a leader does not walk the talk, if he expects people to be punctual and he can't be punctual, or if he doesn't have system, that all of us get stuck somewhere or the other. So in my life, if I being in a city like Bombay where you will never talk about the traffic, मैं कभी कभी आधे घंटे का मार्जिन लेके चलता हूँ और 1 घंटा ट्रैफिक में भी फंसा हूँ. Where whatever you do, it is not up to you to maintain that punctuality. And if I do too much of punctuality, मैं 2 घंटे पहले जाके बैठ जाऊँ तो फिर मैं then नहीं फिर मेरी productivity will go down कि जहाँ मैं अगर दिन में 3 मीटिंग कर सकता हूँ तो मैं एक ही करूँगा. So वो भी नहीं कर सकता. I have to play a balance between it. But at least I call up a person. Now you have Google Map. You say, यार my ETA is that I am not going to reach you before so and so time. At least that person is now free for those 20 minutes, half an hour to do something else. He'll finish another task in the meantime. He will not be hanging in और एक और मीटिंग खत्म कर लेगा या किसी और को मिल लेगा या अपना कोई काम कर लेगा. तो these are very important things. So अगर एक corporate leader is firstly very true to the company, knows their goals and aligns his goals and his team's goals with the company goals. That's the first thing to do. Second is to lead by example. Third is to be very transparent in communication so that people are heard, they are valued, that every person matters. It is, even in the army today, it doesn't work by just commanding. आप order दोगे तो हो जाएगा नहीं. You have to reason it out. Even today, a jawan even a child wants to know why should I do it. मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं पूछा था why should I do it, but my children ask me, my grandchildren ask me, grandchild rather, I have only one. He'll ask me, नानू ये क्यों करना है, मैं क्यों करूं? So the point is today conversation is around influencing. I always tell leaders that communication is not your cup of tea. Your cup of tea is going a step further. Communication is when I can clearly explain to you what I want. But if you don't take any action, then I am a good communicator, but I am not a good influencer. But अगर मैंने आपको योगा की इम्पोर्टेंस आज बता दी, आप समझ गए और कल से आपने अपना मैट निकाल के योगा करना शुरू कर दिया, then I am an influencer because I inspired action. But ये मतलब कितने हद तक ये होता है? Like you said, from a leader's point of view, अगर वो सब कुछ अपने टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करे, ये करे, वो करे, everything, but still if the implementation or the execution नहीं हो रहा है, तो where are we going wrong then? So it is a whole process starting from recruitment. That did you get the right people? Now a good leader will see that if you have got a wrong person, either you train him, give him enough chance, motivate him, counsel him, and if he is not coachable, then either first step, I always tell people, first step is कि देखो कि अगर उसका आपने उसको डाला है फॉर एग्जांपल HR में, पर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट अकाउंट्स में है, उसको अकाउंट्स में शिफ्ट कर दो. और अगर नहीं है तो देन यू आर नॉट डूइंग चैरिटी वर्क, यू हैव टू रिप्लेस दैट पर्सन. आई डू बिलीव कि नहीं करना चाहिए जहाँ तक कि सो इवन साइमन सिनेक सेज एज लॉन्ग एज द पर्सन इज कोचेबल, कोच हिम.
He says, if my child doesn't get marks in the class, I don't turn him out of the house. Okay. Similarly, I don't want to turn my employees out. My job as a leader is to train them, motivate them, bring them up to a level. My job. Okay. But if a person is not coachable, ढीठ है, नहीं होता है, तो या उसको repurpose, assign another job, or get him out, replace. अब ये लोग नहीं करते हैं. So again, these are your, what I say is your value systems. In my life, do you know, I was always believing in punishment is for making a person, not breaking a person. And I'm one person जिसने अपने पूरे 34 साल में एक भी जवान को the punishment in terms of court martial वगैरह नहीं की. मेरी जो local punishment होती थी वो इतनी होती थी, because I used to feel कि the moment I give him such a punishment which will harm his promotion, which will, not that I promoted people like that, but I used to think कि if I can make this person do something better, it is better than just punishing him. And इसको मैं punish करूँगा, इसके साथ साथ इसकी family punish होगी, if it is a monetary thing and all. But when it came to after or in the end of my army tenure, where when I came out from the army prematurely, and that is another story, which is also another TEDx talk, why I left the army. I fell in love with children. I was a chairman of Army School Bareilly. तो वहाँ की जो principal थी, she was not performing. And I had made a commitment to 2,000 children's parents that I will do everything possible to give your children the best of education. And this lady principal was, जिसको मैं बहुत मुश्किल से लेके आया था, because principal नहीं था कोई स्कूल में, इसीलिए स्कूल का बुरा हाल था. When I was given the challenge to do something about the school. So she was in Shillong, बड़ी मुश्किल से उनको मैंने convince करके got them to Bareilly. उसको this principal, we went out of the way, we against the orders repurposed a house, क्या बोलते थे उसका एक और वर्ड था, एक हमने उसको घर दिया जो उस entitled नहीं था. I told the GOC that we have to do something to make Bareilly a attractive enough place for a person from outside to come here. और when she was not performing, मेरे against मेरे सामने एक बहुत challenge आ गया. I don't want to harm a person, welfare. This lady, on my persuasion, has come from Shillong and settled down in Bareilly. One of her daughters, elder daughter, was in Pune in college. That whether she stayed in Shillong or she stayed here, would have still been in Pune. But now the family, instead of being split between Shillong and Pune, was split between husband being in Shillong, daughter being in Pune, and the lady and her younger daughter being in Bareilly. तो मैंने कहा तो उनको बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा अगर मैंने इसको निकाल दिया, पर उसको बहुत चांसेस दिए. When she didn't improve, she publicly announced, because her father was a lawyer and rather a judge in the Allahabad High Court, and we were under Allahabad High Court, and she used to openly say that ये तो इसकी तो पोस्टिंग हो जाएगी 6 महीने के बाद, फिर मैं देख लूंगी तुम्हें. I thought कि if I let her continue, she is going to be harmful to the organization. And looking after her welfare, I cannot allow 2,000 children's career to be suffering. And then I told you, एक staff college में एक lecture सुना था. There's one General Balaram who was a commandant. He, in that lecture on leadership, had said something about streak of ruthlessness. He says, you be very good to people, you be humble, you be kind, you be a nice gentleman to people, but maintain a streak of ruthlessness कि अगर एक आदमी को का example set करने से पूरी unit ठीक हो सकती है तो करो. And that is the time when my wife came as a big strength, when I once became a little weak and I said, why am I taking all this chance and risk
and this lady is, you know, after all, Allahabad High Court, there were threats like that. So I said, softer option for me was to forget it and let it carry on. 6 महीने के बाद मैं चले जाऊंगा. Let the school, let somebody else do it. No, I'm not accountable to anyone for the school after 6 months. But that is not what a good leader does. Leader is, you know, conscious about his responsibility to the organization. And I couldn't do that. Also, in the NDA, we were taught something, and it is a prayer which we used to do. और उसमें ये लाइन थी कि God give me the courage to opt for the harder right instead of the easier wrong. और वो ध्यान में आया और मेरी वाइफ ने कहा, आपने खड़े होके 2000 बच्चों के पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि you will give them good direction. You can't now buckle out of it. More strength. And I went ahead और हमने उसको प्रिंसिपल को निकाल दिया. और I think I was the only chairman. Some people say I'm still the only one, but at least till I was in the army, there was no other chairman who had ever taken a step like this. Taken a step like that in any army school. So towards the end of my career, जब मैंने किसी जवान को ऐसी कोई not capital, I mean major punishment नहीं दी थी, but यहाँ पे मेरे को करना था. But आपको लगता है ऐसे कि अभी ऐसे leaders होते भी हैं? बहुत है. कॉर्पोरेट में भी हैं. I mean कॉर्पोरेट में हैं. कॉर्पोरेट में हैं. मैंने देखे हैं. मतलब जो ऐसे के मतलब अपनी इंटेग्रिटी के भाई ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, देन हमें उसके डायरेक्शन में ज़्यादा हित में ज़्यादा सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ आवर ओन वेलफेयर. कम है लेकिन है. देयर आर एग्जांपल्स. So I feel a lot of people need to learn from those people and learn from their examples. See, after 2-3 days, I'm going to be doing a workshop for a university in Singapore. And in May, I had given a talk to them physically, and now I'm going to do it online. And the topic given to me was education system in India. What is so special that at least 40, 50, 20 तो बिल्कुल बहुत known लोग हैं, like Sundar Pichai and all those who are world-class leaders leading the best of the companies are from India. And no other developing country has been able to achieve that. So India के education system में ये क्या है? So when you study those leaders, ऐसे leaders हैं. कुछ तो ऐसे इंटरनेशनली बड़े फेमस होंगे, कुछ इंडिया में हैं. आई हैव स्टडी सम ऑफ देम एंड सम ऑफ देम आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स. आई एम नॉट नेमिंग देम बिकॉज इट्स नॉट गुड टू नेम देम इन पब्लिक, बट देयर आर. द ओनली थिंग इज दैट यू फाइंड मेनी मोर इन द आर्मी देन यू फाइंड इन द, बट यू कांट जनरलाइज. You find sometimes a leader not at a CEO level. You will find a business head. You will find, I've seen people leaving a company. There's one person who's, I get very tempted to name him, but I won't. He was so loyal to his company. He did everything to make things happen. But he found that the promoters or the owners were not really, when he found that their value systems were conflicting, कह कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे, he still carried on to complete the task that he was assigned and told them well in time कि मैं आपका ये task करके निकल जाऊंगा, मैं अभी I don't align with your values and you're not listening to me, मैं चले जाऊंगा पर मैं ही अपना काम करके जाऊंगा. So that type of accountability, that type of responsibility, there are people who take it. They take stands also. There are people who have taken stands and not gone by what the company wanted them to do. So people who have moral courage. ये examples जो आप बोल रहे हैं and the values या जो हैं,
आर दे एप्लीकेबल ओनली टू बड़े कंपनीज जो होते हैं या इवन टू दी एमएसएमईज, बिकॉज एमएसएमईज जो है वो एक्चुअली बैकबोन है हमारी कंट्री की बहुत आपके ज़्यादा तरह। एप्लीकेबल है टू द स्मॉलर कंपनीज, and I'll tell you why. Because those companies, unlike the major companies who have a lot of policies laid down, systems laid down, startups में भी वो कर रहे होते हैं, तो they still haven't got an organizational culture. In fact, I feel that the responsibility of a business owner in a startup, and particularly these days in India, most startups are not manufacturing startups, they are IT based and all that. उनकी जो leadership values हैं, and I personally do a workshop, and I'm planning to do some retreats on that, is how to convert from a business owner to a business leader. See, I'll tell you what. मेरा मानना है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने भी एक तरह से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द आर्मी, सो आई हैव आल्सो experienced a startup which was I'll say a leadership company. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक आइडिया है और अगर आप पैसे का बंदोबस्त कर सकते हैं, पैसा है नहीं, पैसे का बंदोबस्त कर सकते हैं, मीन यू कैन गेट अ वेंचर कैपिटलिस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो you with these two conditions you are fit to become a business owner. Am I right? Absolutely. एक business idea चाहिए, ये चाहिए. Some people say business acumen. मैंने कहा वो तो जो भी idea से आता है वो सोच के आता है कि मेरा business acumen है. हाँ, तो ही start करेगा वरना क्या? हाँ, वो बाद में ही prove होता है कि उसका business acumen था कि नहीं. बराबर. Okay. So now what people in the corporate जब join करते हो, पहले 5 साल तो आप बिल्कुल फॉलोअर हो, आपको जो लीडर बोलता है आप करते हो, तो आप आस्ता आस्ता देखते हो कि लीडरशिप क्या है. यू सी इट, you don't experience it, but you see how leaders are behaving with you. Right. Maybe after 5-6 years you get 1 or 2 people and you become the small leader of a team of 2, 3, 4, 5 whatever people, and that time you still have a leader you always have, of course. You still have a leader who is giving you the KPIs, giving you the targets, and you are not making your own goals, you are implementing his goals and getting the job done out of those 2, 3, 4 people that you have, which means you're still not experiencing leadership, but एक छोटा सा step forward हुआ कि आपने थोड़ा सा लोगों से काम कराना सीखा, and then after about 10-15 years you reach that level where then you also at least set partial goals for your business unit or whatever. As against this, in a business scenario, this owner or owners, if there are 2-3 partners, they have nobody to look at, so they don't learn leadership anywhere. And whatever they learn is from their own experience, and sometimes it is too costly to make mistakes at the cost of the organization. So I feel that these startups need to learn leadership from people like us who teach leadership, who have got the experience from business. I've got the experience from military. Some people have only there are many trainers like me who have come out of the corporate world to become trainers, who have a lot of corporate experience. And I've never been into the corporate, so I don't have that experience. I only have corporate experience from outside. So ये सब मिला के I feel that a business leader or business owner should become a business leader. And these people, the first thing, if I have my say, is to tell them strategic thinking. ये सोच के चलो कि 5 साल, अभी आज के ज़माने में 20 साल की बात नहीं कर सकते. It's too long. Things change a lot. So अब तो अगर आप 5 साल, तो strategic thinking है. I say goals 1 to 2 years. 5 साल तक एक विजन होनी चाहिए,
or then every time you do, and I also talk about quarterly goals. I do a lot of work on goal setting and time management. And time management has been my expertise also. We'll come to that later if we get time. But मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये है कि your question about small companies and business owners and startups, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. उनको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सेट करना है, उनको रिक्रूटमेंट सीखनी है, लोगों को इंटरव्यू करनी नहीं आती है, उनको लोग मिल जाते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को ले लेते हैं, फैमिली मेंबर्स को ले लेते हैं ऑब्लिगेशंस के लिए. Corporate world doesn't work like that. But is that good or bad? Like for example, now there are two different type of schools of thoughts. जैसे for example, जैसे मैं भी मेरा भी as a leader, as a business owner, I also have a very strict thought process like that कि it's never good to involve family into your work. The reason is because somewhere आप मतलब जब भी when you have to put the line or when you have to draw a line क्योंकि this has to be done, this वो आप फैमिली के साथ में नहीं कर सकते because somewhere interpersonal relationship definitely आ जाती है. But then I know a lot of other people who have grown like businesses and again like they've become a sizable business is because they feel कि काफ़ी सारा ट्रस्ट जो चाहिए वो ट्रस्ट बेसिकली अपने खून से ही आता है. वो ट्रस्ट आप कोई इनकलकेट नहीं कर सकते हैं किसी और को फ्रॉम द चेन ऑफ कमांड. तो so what works? So I have gone through it myself. Okay. मैं ये कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कहूँगा कि कभी भी अपने somebody you love, don't do business. I will say that. Okay. I don't want to discuss that personally here because it's a personal issue. But I have an experience where I feel नहीं करना चाहिए. Yes. But in my own family, my son and my son-in-law are doing business together. Partners. I told my daughter, please मत करो. मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं और अगर उनमें रिफ्ट हो गई तो that will be the last thing I like to have happen in my life. And from my experience, I felt कि that is quite likely to happen. But they insisted. And then my son said, Papa, we have a third partner. And we have got our system set right from the beginning in a way that probably we didn't do. Now, it's been a couple of years that they're doing it. They're doing it beautifully. God, cross my fingers the way it's going. So I feel it all works according to individuals. You can't generalize it. But if you talk about percentages, there are more failures than successes in family businesses. Starting from, you can see Ambani's and all. कहीं जाके भाइयों में, सगे भाइयों में भी वो rift आ जाती है. Right. And particularly, it doesn't happen in the initial stages. It doesn't happen in the growing phase. It happens in the success phase. And where then ladies also come in. कि तुम तो इतना काम करते हो, वो तो नहीं करता है, and all, या उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास कैसे है, when you're partners, all that stuff comes in. And then also what happens is, it is not only between you and that relative of yours, whether it's your brother, your father, your uncle, whatever. वो जो larger family है ना, उसमें से भी कुछ interference आएगी. So it becomes a little complex affair. But I feel that if you are very strong in your principles and you have although again we also tried, it didn't work. When you say that we'll not let anyone come in, when we are very clear about our business decision and family decision, and my children are doing that. I mean, I'm learning a lot from them, and I wish if we could have done what they are doing, probably experience could have been different. So yeah, I think it's a controversial thing. I don't think there's a standard answer for it. Got it. Right. ये एक actually जैसे business owners और entrepreneurs के बारे में बात कर रहे थे. So there is this attitude which is there that the entrepreneur's attitude that I do it myself best or I do it best.
Have you come across that attitude or वो? See, I'll tell you, in my life, I've been a culprit of that. I used to always, I used to do things beyond a call of my duty. I've got one CO of mine, commanding officer, whom I take as a godfather. मैंने सबसे ज़्यादा उनसे सीखा. His name is Brigadier Dharam Prakash. He is here only in Mumbai. And I learned so much of leadership from him. So one day I asked him, after he had retired, and after I had come out of the army and I was in the corporate world, and I said, sir, why is it that now people don't do this? He said, Sushil, you were an exception. I could depend on you because you were far better than others. He says, now everyone is not like you. And my wife used to say that. तो मैं जिस रफ्तार से जाता था, मैं सोचता था कि मेरे लोग भी उसी रफ्तार से चलेंगे. You look back and they're not there. So first, you know, I learned it a little later in life. मैंने बहुत धक्के खाए उसके लिए, because that was ingrained in me. I was a perfectionist, and if I could work 18 hours a day, today I'm 70, almost 74 now. I work about 16 to 18 hours even today, and I don't think my team can work that much. And I now stop expecting people to work as much as I do. Number one. Number two, I learned it the very hard way, and that has become a very strong teaching point for me. I tell people, मेरे को बहुत मुश्किल हुआ था, तुम मत करना. Learn to delegate. And I learned it after I had finished my command. I had become a brigadier. I learned one thing, that, and somebody taught me this, and I experimented with it, and it worked. It said, if somebody can do even 60% of what you think you will do, give it. अपने अंदर एक फॉर्मूला डालो कि अगर ये 60% अच्छा कर सकता है of what he can't do what I'm doing, but I can't do everything. So to be able to do what I want to do, I must delegate. And there is a guy called Rory Vaden, जिससे मैंने टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा असूल देखा, कि which is called a focus funnel. Okay, I'll come to that focus funnel later, but I'm saying 60% अगर वो करता है तो करने दो. तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें ये देखी कि let's say taking the army hierarchy, I'm a colonel and मैं बटालियन कमांड कर रहा हूँ और मेरा कंपनी कमांडर मेजर. मेरी नौकरी मान लो 20-22 साल है, उसकी नौकरी 12-13 साल, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी उतना ही काम करेगा या उस क्वालिटी का काम करेगा जो मैं करूँगा. पर मैं ये भूल जाता हूँ कि जो मैं आज कर रहा हूँ मैं 12 साल की सर्विस में नहीं कर रहा था, इसकी 12 साल की नौकरी. तो मैं उससे अपने जैसी उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? नंबर वन. तो जब ये एक अवेकनिंग हुई that this person, if you give him a chance, probably he'll do things better when he's 20 years of service than you are doing. So इससे उतना काम तो ले लो, 60% तो ले लो, free yourself to do other jobs, because तुम कितना करोगे खुद. ठीक है. Number two, for a leader you should look at, because you can't be skilled at everything. I'm very good at speaking, let's say, but I know that there's a person in my team who's very good at writing. Why should I tell him to write my speech and I deliver it? Rather than writing my speech and speaking. ठीक है. अभी मेरे को एक लड़की मिल गई after when I came out of the army. I started my company, then I came out, became independent. So this girl called Preeti, she told me, I'll take care of all your back-end work. You are a trainer, you only concentrate on your training and your content. पर जो back-end सारा काम मैं करूँगी. And she did a very good job, which means now I delegated that or I outsourced that.
Today, if a leader doesn't understand the value of outsourcing and delegation, he is or she is not going to be able to perform leadership at the level required. हो ही नहीं सकता है, because we have too much to do and you can't do everything yourself and you should not. ठीक है, अभी मैंने जब किसी को सोशल मीडिया डेलीगेट किया फॉर एग्जांपल, मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि नंबर एक, ये जो बंदा मेरा सोशल मीडिया कर रहा है, शी इज रनिंग एन एजेंसी, वो दिन रात सोशल मीडिया करती है. अगर मैं भी अपना फेसबुक जानता हूँ, लिंक्डइन जानता हूँ, बट अगर मैं सारा कंटेंट बनाऊँ, उसके ऊपर पोस्ट भी करूँ, उसके ऊपर एंगेजमेंट भी करूँ, ये सब करूँ, तो मेरा टाइम जाएगा. और फर्स्टली आई कांट डू एवरीथिंग, सेकेंडली शी डज इट बेटर देन मी बिकॉज शी इज डूइंग, दिन रात कर रही है, वो औरों को भी कर रही है, तो उसको एक्सपर्टीज भी है. सो व्हेन यू आउटसोर्स समथिंग लाइक दिस, you not only save your time but you are also getting a higher quality work. So ये एक लीडर को डेलीगेट करना, मॉनिटर करना, एक बड़ा एक सबल डिफरेंस है कि कई लोग इंटरफेयर करते हैं. I say your monitoring should not be interfering. You do have an idea कि क्या हो रहा है, but आप उसमें अपनी चोंच नहीं डालते रहो. Don't keep interfering. Don't say ये कब करोगे, ये ऐसे करो. I'm telling you, एक तो as a good leader ना, don't tell people how to do something. Tell them what to do. And let them figure out the how, because sometimes they will, today's generation particularly, I'm telling you, today's generation will do it better than you do. उनको रिजल्ट बता दो कि मेरे को ये चाहिए भाई. तुम अपना घिसा पिटा ओल्ड तरीका मत बताओ. Because what you did 20 years back, you tell them that. Applicable now, right? And that may not be applicable now. Or there may be a better way of doing it. Understand. और ये बहुत चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती हैं. और ये I'll tell you one very important thing, particularly when it comes to any leader, particularly when we are talking about these startups and MSMEs and all, and that is having a mentor. It is very important to have a mentor. और मैंने ये सीखा टोनी रॉबिन्स से, जब मैं सिडनी गया उसका प्रोग्राम करने के लिए. When Tony Robbins says that I've got 5 mentors or coaches, और वो दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, one of the best people in this field and world known, author of 80 plus books or whatever, and I'm a great fan of his. बहुत कुछ सीखा है मैंने उससे. उसे बोला कि I've got 5 companies, I have a business coach, I have a health coach. उसका जो हेल्थ कोच था उसने हमें आधा दिन की एक्सरसाइजेस कराई वहाँ पे. And he says that if I want to be the world class person, I must take a world class coach. So having a coach and a mentor who can, so I've mentored a lot of people, corporate leaders, in individually and in small groups. What happens is, it is something like the bottle, the content of the bottle cannot read its label. Or no good surgeon can do his own surgery. Sometimes you need somebody out of you to guide you. Thoda left, thoda right. Third perspective. So if there is somebody who can give you a direction कि आप थोड़ा गलत जा रहे हो, थोड़ा ट्रैक पे आ जाओ, तो वो आप खुद नहीं कर पाते. So there is somebody who's required, and if you have somebody who's a mentor, and I say there are 3 things that you must look for in a mentor. 3 things. One is that person should have achieved what you want to achieve. That means so a class 10 student can mentor a class 8 student. You don't need a PhD chap to do it. बल्कि he'll not be a good one. He would have. अब मेरे को लोग बोलते हैं कि सर मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, SSB में जा रहा हूँ, थोड़ा बता दो. मैंने कहा भाई मैंने SSB की थी 66 में, क्या कॉमन है उसमें और आज में? तो मैं नहीं आपको मेंटर करूंगा. यू नीड समबडी हु हैज डन इट रिसेंटली. कैच होल्ड ऑफ समबडी जिसने 2-3 साल पहले किया है, कैच होल्ड ऑफ सम GTO जो आज GTO है. तो ऑल्दो आई कैन टेल यू अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटल, यूनिवर्सल, दे हैव नेवर चेंज्ड, बट ask somebody new. So one is that you should have done, your mentor should have achieved what you want to achieve. Number 2 is that mentor should have inclination and time for you. And the third one is
that your mentor should be interested and focused on your success more than his own. तो ये 3 चीजें अगर मिलती हैं तो वो मेंटर है. इंटरेस्टिंग. वाओ. यू नो मतलब अच्छा, अभी मैंने एक फोकस फनल की बात की, मैं आपको Right. वो भी बता दूं. और ये एक रोरी वेडन की है फनल, which is says that पहले तो एक विश लिस्ट बनाओ कि आपको क्या करना. Let's say you make a list of 60 things that you want to do this week. 60 things. Now you have your goals कि आपको quarterly goals, half yearly goals. I say start from your yearly goals and come down to your monthly goals. And I have a system of quarterly goals, which is a roll-on quarterly plan. That means every quarter you revise your next 3 months. तो अगर आपने अपने वो गोल्स बना लिए हैं और क्लियर हो आप उसके बारे में, तो अभी आप वो 60 चीज़ों में पहले तो कहता है फर्स्ट लेवल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओवर टॉप लेयर ऑफ द फनल इज एलिमिनेट. तो अब इसमें से देखो, टिक मार्क करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके गोल को के साथ अलाइन नहीं है. राइट. दिल करता है करने को, जस्ट समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, बट डज इट रियली मीट योर गोल? Like I like to see YouTube videos. So should I see 10 YouTube videos? I like to watch them, but are they really required? No. तो ये इसको टिक कर दो, ये नहीं, या क्रॉस कर दो, ये नहीं चाहिए. ठीक है. So eliminate out of that 60 all those which are not aligned to your goal. Yeah. तो मान लो आपने 20 निकाल दिए, 10 निकाल दिए, whatever. अब जो बच गया, now it goes to the second level of filter, and that is automate. इसमें से क्या ऐसे टूल्स हैं, whether it's AI, whether it is whatever tools, whether you, for example, you want to pay your bills and you can do क्या बोलते हैं, your standing instructions or whatever, तो वो कर दो कि मेरे को बार बार बिल नहीं पे करना पड़े, टाइम नहीं होना, ऑटोमेट कर दो. तो जो जो ऑटोमेट करना है वो कर दो. द थर्ड वन इज डेलीगेट एंड आउटसोर्स द वे आई सेड. Now he says, then whatever is left out of that funnel is now your responsibility. Right. Now I put another filter there and said, आपके पास मान लो लिस्ट बन गई 20 आइटम्स. अब उसका एक टाइम चेक करो. टाइम चेक इज दैट एवरी आइटम यू से इसको कितना टाइम लगेगा, एंड देन यू वर्क आउट योर अवेलेबिलिटी ऑफ 1 वीक कि मैं इतने घंटे सोता हूँ, खाना खाता हूँ, ये करता हूँ, मेरे पास अवेलेबल टाइम क्या है. And अगर available time exceeds this, it's fine. That means you can then put up your second, कुछ low priority चीजें भी कर सकते हो. But if your available time is lesser than that list of 20, then please prioritize further. And then he says, procrastinate on purpose. Now, procrastinate is a very negative word people say, but procrastinate means that when you put off things because you don't feel like doing them right now, then it is procrastination. But procrastinate on purpose is, I know I need to do it, but I need not do it this week. ये अगले हफ्ते भी हो सकता है, ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, तो that is procrastinate on purpose, which means now you put it off. But next week की जब लिस्ट बनेगी तो you put it back through the funnel, because अभी तक हो सकता है कोई नई ऑटोमेशन टूल मिल गई, हो सकता है कोई नया बंदा टीम में दिख गया, ये कर सकता है. And then again filter it till you have to do it yourself, and then if it works in that priority, do it. And many times over a period of time वो redundant ही हो जाता है. For example, मेरे पास अभी last month एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो बहुत ज़रूरी था, तो मैं उसकी ट्रेनिंग उसकी like I had procrastinated on purpose कि ये मैं next week करूँगा प्लान. But before the next week could come, the client said कि I'm not, my people are not available, we'll have to postpone it to December. So now it had to be eliminated, because अभी नहीं चला. मैं नवंबर में वो प्रोग्राम होगा नहीं होगा, तो I don't want to spend time in planning something which is not sure as it. Exactly. Right. I've got higher priority jobs. Yeah. So ये करना पड़ता है. Okay. ये आपने डिसिप्लिन के बारे में पहले बात की थी, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक है क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि what is the difference that
जो डिसिप्लिन होता है वो इक्वेट करता है टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी in, of course, in the chain of command in the army and also in the corporate world. How does that work?